See, the most important part of the body is the nervous system. सबसे अच्छा important part of the body is what? Nervous system. Is the beginning of the embryology. यानी the brain stem development and the brain development. जैसे brain stem development होता है, embryology अगर आप पढ़ते हैं, बच्चे का जन्म कैसे होता है, तो एक लकड़ी की तरह एक embryology develop करती है, embryo develop करता है, उसमें से brain develop होता है. फिर हम नीचे आ जाता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. Start. Yes, sir. So we muted them. They just want to turn on the mic and they have very noisy background. Huh? I say we muted them. They have very noisy background and yet they want to turn on the mic. It's okay, Mini. You have habituated, got work. You have worked with Indians for many time. No, I know, but very noisy. It's okay lah. It's okay lah. See, the brain and nervous system controls all the other functions of the body. See, the main function is we always see. हम देखते कि सबसे बड़ा important function क्या होता है? Brain. And brain का मतलब होता है nervous system. ये एक वो system है जिससे पूरा शरीर से चलता है. The nervous system is the most important part of our whole body. It consists of what? CNS and PNS. Classification of central nervous system is CNS, that is central nervous system, and peripheral nervous system. Write down. Two classification. What are they? Hello. Central nervous system and the peripheral nervous system. CNS and the PNS. क्या बोलते हैं आपको उसको? कॉल कर रहा हूँ, रुको. CNS and PNS. The extreme importance of the nervous system is the medicine is based on the serious nature of the many disorders affected. Now you know why I choose neurology in this teaching and everywhere. Because neurology was such a subject where only palliative care was available. If you see these slides, you will find it is a palliative care disorder. Most of the cases are palliative care. So, to find an effective treatment is very difficult. So now the effectiveness is this. Now there was a person who brought me one patient yesterday. He said, "Sir, you have given the injection and he did not recover today. Can you imagine a slip disc can be recovered in one day?" Is it possible? स्लिप डिस्क क्या एक दिन में ठीक हो सकता है? विदाउट लाइफ करेक्शन, बिना कुछ किए सर्जरी से क्या एक दिन में ठीक हुआ है किसी का? कौन सा सिस्टम है जिसमें एक मिनट में ठीक हो जाए? पेन इज रिड्यूस्ड बट द डिजीज इज नॉट recovered. You have to recover the disease. The most important part you are understanding here is to recover of the disease.
हाँ सर. Next slide. And the most important and the biggest benefit you can grow is in the neurology. Why? Because the causes of more hospitalization than any other disease, including heart disease and cancer, is neurological diseases. If you see the figures, सबसे ज्यादा अगर आज एडमिट अगर पेशेंट कोई डिजीज में एडमिट होता है, आज अगर मेडी हॉस्पिटल भी देखो तो आधी बढ़ती है, पूरी बढ़ती है किस चीज से? न्यूरोलॉजिकल डिजीज से. Why? Because इतना जमघट है इस बीमारी में, इतने 1000 डिजीजेस. हाउ मेनी? 1000. 1000 बीमारी. इतना तो सारा अपना पहाड़ा भी अपने को बचपन में भी याद नहीं कराया होगा. More than 201. मुझे याद है class 2. When I was in class 2, I did not study more than 202. And when I came to know about neurology, I became mad. Why? 1000 diseases, more than 1000. And now the cost of per American is 400 billion annually. Imagine कितना बड़ा expenditure है, कितना बड़ा market है ये. $400 billion annually. यानी कितने करोड़ हो गए? How many billion Indian currency? I think 32,000 billion only in America. What about India? I do not know. 25,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है ये. और अगर आप न्यूरोलॉजी की बात करें तो नेक्स्ट. तो तुम्हारा लिम्फोमा में दर्द होने से छोड़ देना. You find any discomfort in your hand? Give it. In this country alone, the numbers are overwhelming. Now, if you see every moment, every minute, you have a CVA. And the CVA is Mother Central Cerebrovascular Accident, strokes. Baap re baap. The conditions are so bad that when you speak about strokes, and there is no treatment, pile up of cases are there. That is why we decided that those who are really serious, they should study. And that would include acupuncture way of treatment in their recovery. And those who are not serious, let them not include. Those who are really more interested, will make them what? More interested. Today, the most important thing what we did is we are purchasing the neuro microscope. We have already ordered for RTMS from Norway. Transcranial magnetic stimulation. RTMS. Go previous slide, previous one. So you will be knowing that the third ranking cause of the disease in अगर आज हम लोग रैंकिंग दे दे grade 1, grade 2, grade 3 of diseases कि सबसे ज्यादा मरने वाले लोग कौन सी बीमारी से हैं, it is from central nervous system. Every day we get typical stroke and every day we see that they are about to die. So you can see this is a very small figure. I said 5 lakh. I think only 5 lakh patients are in Telangana, the state where I am. Not annually, monthly. Monthly it will be too high, but quarterly you will get more than 5 lakh patients suffering from CNS.
If you go to villages and all, large number of peripheral diseases. Everyone is suffering from what? Neuropathic, neurogenic conditions. हर आदमी को नसों की बीमारी हो रखी है. बोलना मुश्किल है कितना figure जाएगा ये. You see how I struggle in my clinic. I don't even get time to touch my mobile phone also sometimes. So, next. आवाज क्लियर है मेरी? Can you hear me? क्या बहुत स्लो है, आवाज आ रही नहीं. हाँ? स्लो है, आवाज आ रही नहीं ज्यादा. अब? हाँ अभी अच्छी है. सिर्फ अब अच्छी है. अब ठीक है? हाँ ठीक है. अब आवाज आ रही है? आ रही है. कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो कैसे सुधार होगा? जी सर. Only if you see epileptic seizures. Now, epileptic seizures, they classify into various types, strong bleeding seizures, and various types of seizures are there. We'll teach you about seizures in various class. But if you see, alone, if I see, every day I overcome more than 50 patients of seizures every day. I've started denying seizures because very difficult to recover. Stroke, every new condition I'm getting every day. It's very difficult to hold such situations. And now movement disorders like Parkinson's, now they say 1 in million, I think 1 in 1,000 patient will get a patient of movement disorders, Alzheimer's, Parkinson's. आप समझ सकते हैं what is the category of patients? And these diseases, even neurologist says, go for acupuncture, acupressure, whatever you like to, you go. G, Yes, sir. this statistic, is it the Indian one or American one? 1.5 million. 1.5 million is Indian. Indian. Wow. That's a lot. More than this. This I just typed. Okay. 1.5 million you will find in my state alone. I'm typing of my state. It's a population of 120 crores, 1.2 billion. So 115 lakh seizures you will get in India. I think alone in Assam it was more than 10 lakh seizure patients. So what is the underlying cause? See, underlying cause is a stroke. Why so many stroke? Because a lot of Indian are vegetarian. No. It's not because of the vegetarian, because of their lifestyle. But when I went to London, why did I get so many cases of seizures or movement disorders like Parkinson and all? It's same all over the world. That's why I chose nervous system, because it has less controversy. If I go to diabetes, lot of controversies will come. Why I have chosen? Because it's a non-controversial subject. ये इसमें कोई controversy होता ही नहीं है. Right? Am I clear? Thank you. Now you will be knowing, in this country alone, 2 million totally blind individuals are there and 13 million visual impairments. But this is a very small figure, I said. And that is why I have set up micro acupuncture unit.
Now because I have treated in my past retinitis pigmentosa, staphyloma, and other eye diseases where the eye is lost. So I'm establishing the complete eye unit with neurosurgical microscope. So does that mean that the blind will see? That's saying That's wonderful. that's the thing which makes it wonderful. Is the dynamicity of the brain. You can recover the disease. I've recovered large number of cases of visual impairments. That is why I bought what reflectometer. Now you can check the power of the glass from the computer. I'm bringing in that ophthalmoscope. I have my ophthalmoscope. You can see the fundus and everything very clearly. EMG, EEG. So you cannot compete. We are working on scientific basis. राजी सर हम्म। क्या बोल रहे थे? तो मैं ये बोल रहा था कि अब मैंने पूरी आई मशीनरी यूनिट का जुगाड़ किया है हमारे पास, ताकि मैं अपनी बात को लीगली साबित कर सकूं कि अब आपकी आंख इम्प्रूवमेंट हुई है, जिसको स्टेफिलोमा ग्लूकोमा ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये आंखें जा चुकी है बिकॉज ऑफ सम आई डिजीजेस। अब उसको रिकवर करने में हम लग गए हैं। वेरी डिफिकल्ट पाथवे, पर इस पाथवे पर आप चलते हैं तो ब्लाइंडनेस भी रिकवर होता है और ब्रेन भी रिकवर होता है। साथ में ईएमजी एनसीवी टेस्ट होने से कौन सी मसल वीक है, कौन सी नर्व वीक है, उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे और फिर रिकवर करेंगे। A more difficult Indian is 17 million totally or partially deaf person. So in many partially deaf person, we have recovered their deafness. Next. Now, if you see, around 2,50,000 people have multiple sclerosis, 7 lakh people have cerebral palsy, 3 million people are affected with Alzheimer's disease. So this is a very small figure. I'll tell you, there is no figure of CVA. हर मिनट में एक सीवीए हो रहा है, दैट्स ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। बट पैरालिसिस का ट्रीटमेंट 12 साल पहले भी वही था, 10 साल बाद भी वही है। देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस ऑफ टुमारो। देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन। पार्किंसन इज ए डेथ डिजीज। हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे वैसे करके जब मरने वाला होता है तब लाते हैं उसको। More than 2,50,000 have multiple sclerosis. आप समझ सकते हैं न्यूरोलॉजी का कितना बड़ा फील्ड है। Why I'm interested in neurology? Because there is no treatment. For kidney, you have a transplant, but for brain, there is no treatment, no medicine, only palliative care. That is why I always see you
केस को ठीक से पढ़ो, जानो और समझो. In addition to this, 5 lakh people have accidental head and spine injuries. You see, every day we get spinal cord injuries in our clinic. 5-5 साल, 10-10 साल से ये पेशेंट बिस्तर पर पड़े हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और आराम से ट्रीट हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं. मेरी वेबसाइट पर, मैंने फेसबुक पर पढ़ा, पहले स्टेज से आज तक कितना रिकवर हो गया. अब तो हम रोबोटिक्स, पूरा रोबोटिक्स कर रहे हैं. आपको मालूम होना चाहिए, वी हैव परचेज वन रोबोटिक ग्लव्स, and then now we have been able to recover the fine movements very nicely. Fine movement tables we are purchasing, gait trainers we are purchasing, so we are going very high way. Not only that, we will be having CT scan, MRIs, so things are different tomorrow. We can recover all these diseases. If someone is saying that this disease cannot be recovered, I think they have not tried their level best, or their knowledge is not little, or they don't want to study. Medically, it is not the issue whether it can recover or not. Issue is whether you want to recover or not. That is the issue. आप ठीक करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आपकी इश्यू के ऊपर. Acute head injury is the leading cause of the death or disability between 2 to 40 years. Yes, when the acute brain injury, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं CVA या road accident, RTA, is a major cause of death between 2 to 40 years. It's a major reason. जैसे पार्किंसन 60 के बाद आता है, 50 के बाद आता है, ये दर्द भी 50 से 60 के, सॉरी, 2 से 40 साल के बीच में आ सकता है. एंड हेड इंजरी तो बहुत ही अच्छा है. पूरा ब्रेन इंजरी हो जाता है आरटी एक्सीडेंट से, कैरोटोमी करना पड़ता है. You have to go for keratotomy, keratoplasty, and patients become lifelong paralysis. You ask one neurologist, what is a neurosurgeon, when your patient will work? He said, it is not my department to say when your patient will work. I can do the best surgeries, but on my part, I cannot say he can walk. So if you think by surgery the patient will recover, it is not like that. Without surgery, the patient will recover. It is not like that. Next. सॉरी, थोड़ा सा थका हुआ, और कोई बात नहीं. प्लीज डोंट माइंड. हाँ प्रकाश जी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यस यस, आंख लग जाती है बात करते करते. कोई बात नहीं. So the primary functions, see now we often always says, see I don't have a habit of teaching with the help of slides. I always close my eyes and teaches. By chance if I close and I sleep for 1 minute, just wake me up, okay? See, the problem with the human brain cells is there are 100 billion neuron cells. हमारे पास 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स है. जितनी भारत की जनसंख्या, उतने तो न्यूरॉन सेल्स आपके पास है. अब इसमें से एक भी उल्टा सीधा हो जाए या 100 भी उल्टे सीधे हो जाए, आपकी हालत खराब हो जाती है. एक आदमी बदमाशी कर जाए, पूरे 100 बिलियन सेल्स की बर्बादी हो जाती है. now आप एक बात सोचिए, जो स्ट्रोक आता तो क्या होता होगा? when there is a stroke inside the brain, what happens? What happens? Huh?
Nerve cells are damaged. And then how do you recover them? How do you recover a stroke patient? Neuroplasticity. I am asking how do you recover? I'm not asking the principle. How do you recover? By stimulation. Where are these stimulators with you? Do you have stimulators? In this class, more than 80% of the people do not know what is brain stimulation. Let us discuss about this topic today. When you have come about 100 billion neurons, let us have a very good discussion on this topic. I think we have 30 minutes in our hand. Yes. So we'll discuss about that topic first. How many neurons do we have? 100 billions. All are busy with their activities. Now, in this activity, there is a networking system, like mobile network जैसा होता है, वैसा एक networking system establish होता है. जैसे आप यहाँ से फोन करते हैं, खाली प्रकाश जी को मेरा फोन क्यों जाता है? हजारों आदमी को जाना चाहिए. कहाँ मैं बैठा, कहाँ प्रकाश जी बैठे? 100 आदमी है, हजारों करोड़ों आदमी में से सिर्फ प्रकाश जी को मेरा नंबर क्यों मिलता है? Because the entire concept is you have to dial for that particular nervous system. We have developed this fellowship program for two reasons. One is what? Neurological disorders and many disorders which are not able to be recovered. We have to revise those subjects and we know how to recover them. You can go to the website, Facebook, and you can see the live videos of M.K. Sastri, M.K.S.A.S.T.R.Y. Sastri in Facebook. You will see 250,000 typical neurological disorders recovers. Even today, this is the only clinic in Hyderabad which works 22 hours a day for the recovery of the patient. Not only in India, I think in Hyderabad, in India or even in Malaysia, I don't think people work 22 hours for recovery of the patients. Continuous 22 hours, I don't think so work is done by the chief physician. So we have found out certain ways like RTMS, repeated transcranial magnetic stimulation, DTMS, direct transcranial magnetic stimulations, different types of coils, and all we have known. And we know how to recover this. So first is the division of this, second is the fellowship. Once you complete the different types of fellowship, it will be converted to what? MSc course from one reputed university. But for that, we need 150, 200 students. You appear your exams and you can take MSc. This fellowship course is entirely free and it is run by an Institute of Neurosciences. It's going to be registered as a charitable trust, which is giving a free course to all over India. We have completed more than 500 students in 2 years of fellowship from more than 18 countries of the world. People have been benefited, people have learned, and people have done. हमने अभी तक 16 कंट्रीज में ये डिग्री दे चुके हैं और सबसे बड़ा बात है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये रिवीजन और एडवांस दोनों बातों के ऊपर डिस्कस करता है. आधे प्रोफेसर भी है, मेरे साथ न्यूरोसर्जन्स भी आएंगे बात करने के लिए. तो सबका प्रॉब्लम एक ही है, मेरा पेशेंट कब चलेगा. उस बात को ऊपर आज हम गहराई से चिंतन करना चाहते हैं. The fellowship course is nothing but a training course. It is free course. Anyone, everyone is invited. We give you direct answers how, what, and when things becomes what can be recovered. Sir,
Sir, हाँ, particularly I want to know that it is how to useful for particular that is what I physiotherapy. am saying. It is useful because it will improve your knowledge. It will revise your knowledge because you have forgotten how to recover a CVA patient. You have forgotten how to recover an epilepsy patient. All these patients are drug dependent. Are you include a dry needling session in this course? Definitely, there will be a dry part, not the whole part. That has to go to it separately because dry needling acupuncture itself is a big syllabus. आप दो चीज को एक साथ कैसे मिलाएंगे? No, I mean physiotherapy So, use dry needling, so I ask you. no, I'm telling you, dry needling part is how to use in certain spasticity, certain conditions. Not only dry needling, IV nutrition, all these are included in this part. How to study an MRI, how to study an X-ray versus MRI, how Very to good. study neuroanatomy. Why only me, M.K. Sastri? Other professors are also taking class. Mohan Singh also will be taking class. What types of blocks are given? Different types of blocks. Fine. But this is a free class. We are not paying them any money. You will not get many classes from them. And what about certification of physiotherapist? Registered Those who are qualified people, they will get fellowship training program. Those who are not qualified, they will get advanced training or something they will get. Yeah, Certification will be given to all the people who have completed 70% of the fellowship in No, a or, convocation. or registered physiotherapists are qualified or not? Yes, registered physiotherapist जो BPT है वो सब qualified है. Okay, fine. जो यूनिवर्सिटी से पास आउट है वो सब qualified है. Very good. Okay, fine. Please continue. Now let us close this topic. Close the slides. Let us talk about brain stimulation. Now brain has two components, electrical and chemical. So when the threshold, whenever you give an impulse from here, a certain threshold is reached and you get a target drug delivery. In this way, I have worked with hundreds of patients in the terminal stages. If you come to my clinic, you'll get only terminal disease. How many of you have come to my clinic here in Hyderabad? कोई आया यहाँ? नहीं सर. कोई भी नहीं आया 140 में. No, sir. Sir, I have come. You are already here. Yes, sir. Anyone else? रावत जी कोई नहीं है? नहीं है कल तो होली है ना? सर. Tomorrow 2-3 we have दिन के Holi, बाद so मैं everyone आऊंगी. is. That is what I After said. 3 days I'll come. सर कल की छुट्टी रखेंगे, क्लास चालू रहेगा? भाई हमारी क्लास तो रात को 8-9 बजे, कौन सी होली खेलेंगे रात को 10 बजे? ठीक है. ओके, फाइन. बैलून फोड़ने हैं क्या रात को 10 बजे? नहीं प्रकाश सर, जी? नहीं, इट्स ओके. So the problem with us is that we don't have stimulators. Now what you are doing is that you are using a massager pen as a stimulator. Now there problems are there. You cannot use a massager pen as a stimulator. Lot of things are there. If you see the internal circuit, the power generator, the pulse generator itself has lot of circuit problem. तो उस सब चीज को आउटकम करके भी generators, certain power generators which gives impulses to the brain and then it recovers. आज के दिन में 3 ही है, डायरेक्ट ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एंड ड्राई नीडल बेस्ड ब्रेन स्टिमुलेशन. नाउ यू पुट ये क्या नाम है, KWD is prohibited. In research papers it has been clearly said it cannot be used. Multiple higher impulses cannot be given in the scalp or brain area. It may create seizures. It may create complications. अब KWD माथे पे लगाते ही पेशेंट की बर्बादी चालू हो जाती है. इवन हम लोग ये जो पेन लगाते हैं वो 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए लगाते हैं एट सर्टेन इम्पल्स. हमने कभी उसको 15 मिनट 20 मिनट के लिए नहीं लगाया. I have seen many people have done it. What has happened? सर ये बात समझ में नहीं आई. देखिए आप KWD माथा पे लगाते हैं. KWD मतलब? कितनी देर के लिए लगाते हैं? KWD मतलब?
वो एक्यूपंक्चर का वो जो मशीन नहीं आता, ये वाला। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं। या गॉट इट। वो आप कितनी देर के लिए लगाते हैं? मैं तो लगाता ही नहीं। आप तो नहीं, आप तो मेरे से ये बात सीख गए। बट ये कितनी देर के लिए लगाते हैं लोग? 20 मिनट, 25 मिनट। लगाना क्या भी आपने नहीं चाहिए, लगाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन को स्टिमुलेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी इम्पल्स जो है ब्रेन को कैलिब्रेट किया ही नहीं है। दिस इज नॉट, नोवेयर इट इज रिटन इन चाइनीज स्क्रिप्चर्स। किसी चाइनीज किताब में नहीं लिखा, इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर की किताब में, कि आप KWT, पहले बात तो ये है कि क्लासिकल और मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम ये KWT को सपोर्ट करता ही नहीं है। बाद में जब यूरोपियंस गए तो इनको बैक पेन ये सब के लिए, स्पाज्म रिड्यूस करने के लिए KWT को इंट्रोड्यूस किया गया। इट इज द हिस्ट्री। अगर आप संघाई यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो खाली सिंपल नीडलिंग होती है, KWT की नीडलिंग नहीं होती है, एंड पीपल हैव रिकवर्ड। हमारे यहाँ भी हम लोगों ने 3 बार सिंपल नीडलिंग करते हैं और 1 बार KWT इसलिए लगा देता कि पेशेंट हमारी जान नहीं खाए, वरना KWT इज नॉट रिक्वायर्ड। उसकी इम्पल्स काफी हाई होती है एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत सारी बीमारियों में काम भी आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता। In large number of diseases, KWT mention is a vestige of what? Needle stimulator. It destroys the disease. So what did we do? We developed the pain stimulator. Pain stimulator like apne paas. I'll show you one pain stimulator which everyone knows. So we use these pain stimulators to recover the disease. Now people say this is the cost, that is the cost. Do you know what is the average cost of brain stroke recovery? More than 20 to 30 lakh rupees, 40 lakh rupees is the recovery of a brain disease. वही काम अगर आप लाख 1.5 लाख रुपए में कर दो, 2 लाख में कर दो, 5,000 में कर दो, तो आपका नाम नहीं हो जाए? अब 10% रिकवरी नहीं आती। आज दिल्ली से पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, आप बताओ, 3 साल हो गए वो दिल्ली में एम्स में दिखाते हुए। द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एम्स। द पेशेंट ऑफ वीर सिंह मेहता is coming to me. He's the best neurosurgeon of India. Was the head of the department in AIMS. His patient is coming to recover to me. You imagine what is the level of recovery? 3 years physiotherapy has been done. Why the recovery has not taken place? Because we are not stimulating the brain. हम लोग हाथ की एक्सरसाइज करते हैं, which creates spasticity बस। आप सोचो मैं रात को 11 बजे तक पेशेंट के साथ बैठ के क्या करता हूँ? अलग अलग तरीके से सीखता हूँ। फिजियोथेरेपी को और अलग तरीके से सीखा मैंने इसको पूरा रोबोटिक्स में कन्वर्ट करता गया, चीजें खरीदते गए। आई से ब्रेन कॉर्टेक्स को स्टेब्लिश किया। यू नो व्हाई आई परचेज्ड ऑल दिस आई इक्विपमेंट्स? नाउ आई एम वर्किंग विद व्हाट? आई एंड ब्रेन। If the eye improves, your brain activity also will improve. This is my new hypothesis. It's a hypothesis because I've seen in many patients where I've inserted needle in the inner canthus and then I've stimulated the brain. Immediate results were there. How much results were there? Immediate results were there. रिकवरी के लिए तो कोशिश करनी पड़ती है। आप लोगों ने कोशिश की नहीं, पूरे वर्ल्ड ने कोशिश नहीं किया। I've seen even Stanford University did not try to recover a stroke patient. You see a website, YouTube, how many stroke patient paralysis did they recover? Motor cortex, 70% brain damage recover नहीं होगा. All the neurologists have said. Now that patient is standing in my clinic. Why? Effort नहीं लेते बस. Exercise, exercise, exercise. Damage is in the brain, damage is in the motor cortex. Without stimulating a pathway in the motor cortex,
Will the brain recover? आज तक न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में हमने जाना ही नहीं, न्यूरोजेनेसिस के बारे में जाना ही नहीं. Before I taught in the class about neuroplasticity, neurogenesis, angiogenesis, but there were two at that time. Two people were only speaking, me and Prakash. What is neuroplasticity? What is neurogenesis? What is angiogenesis? This was the stimulator. Now you get the same thing as what? In the market as massager. We converted the same thing because when we go in outside India or anywhere, there are a lot of custom clearances are there. तो एक ऐसा कॉमन चीज बनाना था जो कहीं भी ले जा सके हम, handy or cheaper हो. Now we are buying RTMS. We are buying it 50 lakh rupees. It's equivalent to the cost of CT scan. So this is a Parkinson's pen, you can see. Why did I develop Parkinson's pen? Because I found that advanced brain stimulator was not responding. This was not responding. That was not responding. I developed this pens for my clinic, not for sale. 1 minute. Hello. Madam, 9:30 you are calling for vacancy. Call tomorrow morning. So how will you stimulate the brain? This is the biggest question. ઓલી Where are the ગાડીને ભાવે જ ને, શું equipments? કહેવાય એને? Where are the devices? જેસુ बड़ा इंटरनेट खोल के 300 देखो आपके ग्राम. पास डिवाइस कहाँ है, इक्विपमेंट कहाँ है. અરે ઓલી उन चीजों को पहले समझो कि ब्रेन नहीं, नाम डिजीजेस को भूल गया. रिकवर करना. નહીં પેઠા નહીં ગાડીને બહુ ભાવે જ ને. प्रकाश जी म्यूट करें. Auriculotherapy. So do you think it's so easy to recover epilepsy? I've seen a patient is taking epileptic medicine from last 13 years, Levy pill 1500 milligram. Imagine. When allopathy cannot recover, how can you claim you can recover? But I started this treatment. I said, within 1 year, we'll recover your epilepsy. He said, sir, I'm ready. I've suffered for 11 years. I had so many drugs. CP children comes, the epilepsy, West syndrome comes. The epilepsy has been recovered by 80%, 90%. Within 2 months, 3 months of the treatment. वो तो आपको समझना होगा आप क्या करना चाहते हैं. Now I put up myself to ask you questions about brain stimulation. Because you are working with 100 million, billion neurons. So how do you understand? What to understand? Please ask the question. आप अपने सवाल पूछिए. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी पास ये है कि हम ट्रीटमेंट करते वक्त while treating a patient, we do not know how to treat a patient, number one. Number two, what are the tools required? We have only few tools. We apply TENS, IFT, ultrasound, HWD, that's all. Now some more equipment robotic has come. By just stimulating yesterday, a brain who came for a patient who's a son, is a MD homeopath who came from Gujarat, working only 2 nights. We worked for how many nights? 7 days, no results. But when we started working simultaneously for the whole night, and the patient is also cooperative with me for the whole night,
You know, we have broken 70% of his what? Plasticity of his brain, spasticity of his brain. He has recovered from paralysis in 2 days. How? We diagnosed it as CBGD, corticobacillary ganglion disorder. एक एक लाइन को स्पेसिफाई किया और जोड़ा तो समझ में आया ये पार्किंसन का पेशेंट विद स्ट्रोक हो गया। 2 साल ट्रीटमेंट नहीं किया स्ट्रोक का पेशेंट का ठीक से, वो पार्किंसन और अल्जाइमर में चला गया। बताइए आप। इस साल कितने लोग मरते होंगे, तरफ तरफ के मरते। डेथ इज ओके, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट डेथ। आई एम आल्सो रेडी टू एक्सेप्ट डेथ। आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन द लास्ट स्टेज, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट डेथ। अभी हार्ट अटैक हो जाए, आई एम वेरी हैप्पी टू बी डाइंग। नहीं डरते मरने से। मैंने तो सुसाइड की कोशिश भी की थी, 500 मिलीग्राम डायजापाम भी मार दिया था, नहीं हुआ। खा गया, डाइजेस्ट हो गया शरीर। आप लोगों की दुआएं थी। What is that capable? 500 मिलीग्राम डायजापाम मेटाजोलम डाइजेस्ट कर गया मैं। सामने डॉक्टर मोहन सिंह, लोग तो सोचे तभी आईसीयू में नहीं जाएंगे, क्या हुआ? मैं तो 9:30 को ड्यूटी कर रहा था। वो भी ब्रेकफास्ट कर गया 8 बजे रेस्टोरेंट में जाके। जब ये लोग मुझे आईसीयू ले जा रहे थे, मैं ब्रेकफास्ट कर गया चटनीस में, एंड 9:30 बजे मैं ड्यूटी कर रहा था। दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। I just controlled my meditative power and I have taken more than 600 milligram of sedative drug and nothing has happened to me. You could see at 11 o'clock, I have given a life next day of my suicide. सर हाँ, सर जीनियस लोगों की बात अलग होती है। अब जीनियस हो या नहीं हो, बात सीधी सी है। टेकिंग ए डीप ब्रीदिंग मीन्स सीएनएस को स्टिमुलेट करना। सांस को ठीक से अगर आप लो तो आपकी 80% बीमारियां खत्म हो जाती है। That is what I said, the work of G lymphatic system. मैंने सांस को एकदम कंट्रोल में रखते हुए इंजेक्शन को लिया, ये सब देखने के लिए कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना खा सकता हूँ सेडेटिव। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मैं 1000 मिलीग्राम ऑफ ये 1 ग्राम मेटाजोलम मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ। जैसे And I'm going to make a Limca book of record of taking 1 gram metazolam. इतना मेटाजोलम लेने के बाद आदमी बचता ही नहीं है। अब देखो मैं 1 ग्राम मेटाजोलम खा के दिखाऊंगा आपको। सर हमें ट्राई नहीं करना है, हमें आपको जिंदा रखना है। एनीवे, सवाल पूछे। हम लोग तो वही लोग हैं भाई, ट्राई करके देखो काम करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो मरो, करता है तो आप साबित करो। सर आपकी बात है। मेरी बात सुनो, आपकी बात सुन के कोई स्टूडेंट ट्राई करेगा ना तो मर जाएगा बेचारा, इसलिए ऐसी बातें मत करो ग्रुप में। आपकी बात अलग है, स्टूडेंट की बात अलग है। मैंने तो इतना ही कहा, सांसों पर कंट्रोल लाना। आपकी सांसों पर कंट्रोल ही नहीं है। सांस को कंट्रोल में ला दे, आप 10 बोतल दारू भी पी जाओ तो आप पर असर नहीं करे। तो वो बात है अलग है। That is the power of the brain. You drink 10 bottles of alcohol or you take 600 milligram of sedatives. Nothing affects your body. I'm the living witness of it. You can see the injection marks over there. Now they have gone perhaps. 1 or 2 you will see still here. So ask your question. I have only said so much lecture. सवाल पूछिए। ऐसे मजाक भी हो गया इस बार। पूछिए पूछिए, जाना है नीचे से। 4 बजे तक पेशेंट भी देखने हैं। सर एक्सक्यूज मी हाँ, सर, ये केवीडी का स्टिमुलेशन ब्रेन को तो नहीं देते, लेकिन आपने जो मैं जो पार्किंसन करता हूँ वो मेरी अलग तरह की ब्रेन मैपिंग होती है। Before I do anything, I calculate the consequences of the treatment, how to proceed, पूरा ब्रेन प्लानिंग सब कुछ करने के बाद एक पेशेंट के पीछे 4 दिन का होमवर्क करने के बाद मैं कुछ करता हूँ। आप लोग 1 दिन 1 घंटे का भी होमवर्क नहीं करते।
क्या आप लोगों ने 8-8 घंटे एक पेशेंट के साथ बिताए? रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कुछ बिठाया आपने? बिठाया तो चलो रिकवर करके दिखाए। मैंने तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव केस को रिकवर करके दिखाया। 3 डेज का सर्जरी था थोरेसिक लेवल पर, पैराप्लीजिया हुआ था, 24 घंटे में मैंने उसको रिकवर करके दिखाया। वीडियोस भी है, पोस्ट भी किए, आप लोगों ने लाइक भी किए। अमेजिंग वीडियो बिना देखे अमेजिंग लिख देता। आजकल तो वो भी शॉर्टकट आ गया फेसबुक में, अमेजिंग दबा दो। Ask something on brain stimulation. हेलो सर, हाँ, पेन और ये बाजार में हमें मिलता है आजकल लेजर का के 2000 मॉडल, ये सेम है या इसमें डिफरेंस है? आपने कभी ब्रेन के नेविगेशन के बारे में पढ़ा है? सर, आई एम यूजिंग दिस पेन। ना मैं आपसे 2-4 सवाल पूछता हूँ। आप ब्रेन को जी जी। ब्रेन पर यूज करते हैं, स्कैल्प पर यूज करते हाँ, होंगे? नहीं, अभी तक ब्रेन पे यूज नहीं किया था हमने। हाँ, तो मैं सर, आपसे फिगर पूछता पॉइंट हूँ, पे आपने करते थे। कभी ब्रेन नेविगेशन पढ़ा है? हाँ, ब्रेन नेविगेशन कर रहा है। और सर मैं ब्रेन मैंने नेविगेशन क्या होता है बताइए? ये पैरालिसिस का मैं नहीं किसी मैं बाकी बातें नहीं पूछ रहा, एक एक सवाल बात करते हैं, जी तो आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा। जी जी सवाल जवाब से ही जी मंथन होता है, राइट? जी विद्या जी। विवादाय धर्म मदाय सत्यम परिणाय खलसे साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च परिरक्षणाय। यानी हमारा काम है विद्या से विवाद नहीं करना। विद्या से हाँ आप अपना सवाल, मेरा सवाल हाँ से बाकियों को ज्ञान मिलेगा, राइट? जी जी। आपने कभी ब्रेन नेविगेशन के बारे में सुना है? नहीं, ज्यादा नहीं सुना, जो हमने स्टडी किया हाँ, है आप तो आपकी सारे बेसिक बेसिक। क्वालिफिकेशन, आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं? सर, मैंने एमडी एकू किया हुआ नहीं, है। बेसिक क्वालिफिकेशन। बेसिक क्वालिफिकेशन में से वैसे एनडी वाईएनएस हूँ, मैं नेचुरोपैथी हूँ। उसके बाद मैंने एमडी एकू किया हुआ है। DNYS ना और BNYS? नहीं, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो नेचुरोपैथी करके चलो इसमें ठीक है, आपने एक्यूपंक्चर में। नेचुरोपैथी करके किया है। आपको ये नहीं मालूम, ब्रेन नेविगेशन का जी मतलब होता है ब्रेन को जी इंटरनली उसको स्टडी करना, जी जी उसकी MRI इमेजेस को लेके फिर जी उसको दूसरी मशीन में हम डाल के नेविगेट जी करते हैं कि उस टारगेट एरिया को हम टारगेट कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे, हम उस जी टारगेट तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पा रहे। ये एक जी सर। न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर है। जी जी सर। अब हम जब ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन लेते हैं तो हमें तो ऊपर का दिखाई दे रहा है, अंदर का कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो हम लोग वो उसके जो नेविगेटिंग मशीन है उसको यूज करके देखते हैं कि हमें किस एरिया को स्टिमुलेट करना है। जी 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 उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑन करते हैं और फिर वो वेव्स छोड़ता है ताकि उसके न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होना यानी एक्टिवेट होना चालू हो जाते हैं। फिर आपस न्यूरॉन्स। में वो नेटवर्किंग बनाते हुए न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन की जो एक्सपांशन कैपेसिटी है, रीफंक्शनिंग कैपेसिटी या हीलिंग कैपेसिटी है, वो जी जागरूक हो जाती है। वो वहीं जागरूक नहीं होती, वो पूरे बॉडी को जागरूक करती है। या ये बात है नंबर 1। नंबर जी। 2, तीसरा कोई स्टिमुलेटर बना ही नहीं है, 3 ही है आपके पास आज के दिन में। अच्छा जी एक मैंने बनाया, 2 फॉरेनर्स ने बनाया। प्रूवन तो ये है। जी प्रूवन इसलिए है कि मेरे स्टूडेंट, अगर आप मेरी फेसबुक पर जाएं तो शुभम बख्शी इन लोगों ने भी वहाँ कलकत्ता जाकर पार्किंसन पेशेंट को 1 दिन से लेकर 5 दिन में कैसे खड़ा किया बेड रिटर्न पेशेंट को, उनकी वेबसाइट में भी, उनके फेसबुक में भी आपको ये एविडेंस मिलेंगे। जी जी सर। आप समझे मेरी बात? जी जी तो मैपिंग का मतलब होता है किस एरिया को स्टिमुलेट करना, कितना स्टिमुलेट करना और कितनी हाँ इम्पल्स पर स्टिमुलेट करना। जी जी जी। आपको अब जाना है इसका इंडिया और आप जा रहे हो पाकिस्तान की तरफ, क्या मिलेगा हाँ, आपको? गलत गलत हो जाएगा। सारा काम ही तो गलत कर रहे हैं हम। हाँ हाँ। हम हम तो फिजियोथेरेपी, हम पैरालिसिस को रिकवर कर रहे हैं एक्सरसाइज से।
एक्सरसाइज से कैसे रिकवर होगा बताइए? ना 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 ना, एक्सरसाइज से नहीं सर, स्कैल्प पंक्चर, मोटर एरिया, सेंसर स्कैल्प एरिया। एक्यूपंक्चर से, कौन से स्कैल्प एक्यूपंक्चर से रिकवर करेंगे बताइए? जियोसल्फा तो पूरा गलत है जी जी, उसमें। डॉक्टर जी, नहीं नहीं, डॉक्टर जी को फॉलो करते हैं। जियोसल्फा की बात कर रहा हूँ या यमामोटो की बात कर रहा हूँ, मैंने तो इस पर किताबें लिखी है। जी जी मेरे पास तो आज 34 साल का अनुभव है। सर। 2.5 लाख पेशेंट्स के वीडियोस ऑनलाइन है, राइट? सर जो चाइनीज सर लोगों ये ने गलती की, वो गलतियों को सुधारना है हमें सर ये आपके उनसे। वीडियो हमें फेसबुक पे मिल जाएंगे? हाँ, फेसबुक पे मेरे 2.5 लाख वीडियोस है, पर देखिए मेरे लेक्चर्स भी है। मैंने निकालने की कोशिश की थी, इसमें MK शास्त्री डेट फेसबुक ऐसे डॉट नहीं कॉम। होता है। आप जी MKSASTRY, भाई someone give him the link of my ID of जी Facebook please। जी वहां जाइए, 2.5 लाख पेशेंट के वीडियोस मिलेंगे, देखिए उनको जी मैंने जी, कैसे रिकवर किया। ठीक हमने ठीक, 15-15 मिनट में पैरालिसिस पेशेंट को चलाया है। एक्सीलेंट सर। 15 मिनट, हम 5 मिनट की बात करते हैं। हम ये भी कंपटीशन लगाते कितनी बार सेमिनार में, आपकी जी क्या एक कप चाय और मेरा पैरालिसिस पेशेंट रिकवर जी, होगा कि नहीं होगा? मैंने आपके लास्ट वीडियो देख रहा हूँ, रेगुलर देख रहा हूँ सर। तो और जब से मैंने ये फॉलो अप किया है और आपके ज्वाइन किया है मैंने, डॉक्टर प्रकाश जैन ने हमें भेजा था तो लिंक कराया, तो रेगुलर आई एम वाचिंग दिस वीडियो सर, नहीं, बट लोगों ने मार्वेलस। और मुझे काफी नॉलेज मिल रही है इसमें। नहीं, आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं, पैसे तो मांग नहीं रहे कोई। सर कोई आपका पैसे कोई बुक्स, फेलोशिप कोर्स के कोई पैसे मांगे तो बिल्कुल मत देना, मैंने कोई पैसे नहीं मांगे। सर आपका कोई बुक्स वगैरह, लिटरेचर वगैरह मिल जाता मैंने है? 40 किताबें 45 किताबें लिखी है, बट वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि ये किताबें ये स्पेशलिस्ट लोग भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ी मेडिकल साइंस की, आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी, एनाटॉमी नहीं पढ़ी, जी जनोम जी। पढ़ा आपने, चौरसिया मेरे पढ़ा। मेरे पास कुछ आपके PDF हैं जो हेड के, अब वो सब जिसमें, PDF से बोले ना हाँ, मेडिकल। जो उसमें आपके ये नहीं नहीं मैपिंग करके नहीं दिखाई भी है। नहीं नहीं, लु, मेरिडियन लु, और लु, एक्यूपंक्चर से अगर पेशेंट रिकवर होने लग जाते तो संघाई यूनिवर्सिटी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। जी संघाई के PhD करे हुए स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, कुछ नहीं आता इनको, वो खुद ही बोलते सर हमें कुछ नहीं आता। जी जी वहां जब ये फॉरेन स्टूडेंट्स जाते तो खाली उनको लिटरेरी वर्क काम कराया जाता और कुछ नहीं। जी जी। तो छोड़िए वो सब बात। आपसे बात करने में बहुत देरी हो गई। पहले कुछ टाइम पहले आपका लिटरेचर मिला था, लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था सर। चलता रहेगा ऐसे तो, बात वार्तालाप चलती रहती। इट इज माई प्लेजर नाउ टू लिसन यू। मेरे को भी खुशी होती है। मैं तो थैंक यू। अकेला, वो सारा दिन सुबह 9 बजे से लेके रात की सुबह के 4 बजे तक पेशेंट देखता हूँ। इस बीच ये 1.5 घंटा का जो ब्रेक मिलता है वो आपके साथ मिलता है। ठीक है। मैं तो लंच ब्रेक भी नहीं है मेरा। ओहो, मैंने एक वीडियो देखा है, आप रात में भी कर रहे हैं, सुबह 4 बजे तक आप पेशेंट करते हैं मैं सर। अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी यहाँ से जाते सीधा चैम्बर में बैठूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक एक यू। अनाथ आदमी कर क्या सकता और बैठा बैठा। नो थैंक यू सर। चलो भाई, मोर क्वेश्चंस प्लीज। Someone for Philippines, someone for Malaysia. Someone from Philippines, someone from Malaysia. Ask questions. इन्होंने सवाल तो पूछे, मैंने डांट दिया क्या आपको? साहब मैंने आपको डांटा कहीं? सर आज इंडियन ज्यादा है। कोई भी हो, सवाल तो पूछो, कुछ तो पूछो। हेलो सर। हाँ सर मैं इमरान बोल रहा था वेस्ट बंगाल से। बोलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। बोल रहे सर, हाँ बोल रहे सर, न्यूरोप्लास्टिसिटी की कोई एक्सरसाइज है क्या जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ा सकता है ब्रेन की?
एक्सरसाइज से न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट हो सकती है, ऐसा कोई पेपर आपने पढ़ा है, रिसर्च पेपर? नहीं सर, ऐसा something मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी हर जगह क्रिएट होती है। आप ड्राइविंग करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, जी खाना खाते वक्त, जो भी नई एक्टिविटी आप सिखा रहे हैं वो न्यूरोप्लास्टिसिटी है। जी आप जब गाड़ी brain चलाना का सीख addition जाते होता हैं, है सर। एक बार मेरी बात सुनिए, आप जब गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो कोई आपको जी बोलता है यू हैव टू टेक राइट गियर, लेफ्ट गियर, फ्रंट गियर? डू समवन टीचर्स यू हाउ टू टेक ए गियर? नहीं ना। राइट सर। उसी तरह when you उसके train लिए the तो brain properly जी with the language of the brain, you don't need to do so much activities. I don't do so much activity in my clinic. अच्छा, थैंक यू सर। More questions? More questions? तो पैरालिसिस से जब रिकवर करना बहुत टफ केस नहीं है, बस वो एक्सरसाइज कर करके स्पास्टिसिटी आ जाती है, डबल डबल ट्रिपल स्पास्टिसिटी आ जाती है, इसलिए प्रॉब्लम आ जाता है, और कुछ नहीं है। बाकी ये सब बहुत आसान चीज है, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। ये ब्रेन नेविगेशन मशीन से करते हैं, मैं ये अंगलियों से आपको ब्रेन नेविगेट करना सिखा देता हूँ। हाउ टू नेविगेट, फाइंड ब्रैकियोरेडियस इन दिस एरिया ऑफ द ब्रेन। यू नीड व्हाट? a good training in neuromuscular ये एक अमेरिकन प्रोफेसर था, उसके साथ बैठ के हम लोगों ने ये टेक्निक निकाली और हम सक्सेसफुल हो गए। See, someone is speaking, mute his mic. Mute mic. So some American professor was learning. I was asked few questions. First question was whether this pen can be used for brain stimulation. I said no, you cannot use it because that pen was not calibrated for brain stimulation. Yes, you can use anything, whatever you want to use in your clinic. But you want to take my advice? I gave my advice that it cannot be used. You cannot use what? Diclofenac sodium chloride as a regular medicine. Whether tramadol is safe. Diclofenac creates renal failure, but tramadol, it does not create. हेलो। हाँ, चलो बताइए, सब सवाल पूछिए। मैं तो जागा हुआ हूँ, आप लोग कब जागेंगे? ये बात सही है आपकी। मैं तो जवाब देने के लिए बैठा हूँ, सवाल ही नहीं पूछते लोग। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आपकी वीडियो रुक रुक के आ रही है। Your voice is not proper, sir. My voice is not proper because our system Yes. is not proper. Our staff is less. We have 150 patients. Yeah, we are not getting you properly. Madam, these videos are just created for some important that this disease can be recovered like this. These are not professionally made. Who makes these videos? The attendant of the patient, the worker, the employees. If it is, can you manage 150 patients a day, 200 patients a day? That also critical in nature. Is it possible, madam? No, sir. On a single man. Now, when there is no physiotherapist, no one, I am managing 150 patients with my nursing staff. Yes, sir. उसमें भी वीडियो निकल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है मैडम।
Namaste. नो वन डोनेट्स और एनीथिंग। ये सब ये मेरे दोस्त ने एक मोबाइल डोनेट किया, उससे जो वॉइस आती है वो आती है ना। हमें इतना टाइम मिलता है बाजार में रिसर्च करने के लिए कि इसके और किसके साथ कैलिब्रेट करे, वायरलेस कौन सा खरीदे, क्या खरीदे, टाइम ही नहीं मिलता, देखने के लिए टाइम नहीं मिलता है। 1-1.5 घंटे का जो टाइम मिलता है वो आपके साथ मिलता है, वो भी खाने से बचाते हैं। लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का जो टाइम बचता है वो आप लोगों को दे देते हैं। This is the truth of the clinic. What we will do? We are already overloaded. हर समय किसी को छुट्टी, किसी को कुछ, किसी को कुछ। पेशेंटों की इतनी कंप्लेंट्स, टर्मिनल स्टेज ऑफ डिजीज, हर 2 मिनट बाद झगड़ा करने आ जाते हैं। उनको समझाना, उनको बताना, उनकी जान बचाना। किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। सारे दिन तो हार्ट अटैक में हार्ट पंप मारते रहते हैं, ऐसे हाथ दुख जाते हैं हमारे। कम से कम इन दिनों 4 हार्ट अटैक तो मैंने बचाए हैं। वो भी रात के 3 बजे। वो तो गनीमत है, हम लोगों ने हर पेशेंट के लिए ये कार्डियो मॉनिटर लगा के रखा, तो तुरंत हमें पता चल गया हार्ट अटैक है तो बचा लिया। बाकी रिहैब सेंटर या हॉस्पिटल्स में तो ये वार्ड में ये कार्डियक मॉनिटर्स लगाते ही नहीं है। एनीवे, सवाल पूछिए। Hello, sir. हाँ I am Tomal Nag from West Bengal. हाँ। Sir, brain stimulation is indicated in acute hemorrhagic cerebral stroke. See, acute cerebral stroke is advised. Woodipong does it. I have not done it in acute because I believe that until the brain is tensed, even IP Cherian believes that when the patient, acute means what? There is a recent hemorrhagic stroke or rupture Ah, in the artery, right? Already yes, the brain is swelling. There is swelling in the brain and the midline is shifting, right? yes, sir. Brain is already tensed. Yes, sir. We are trying to what? Release the pressure of the brain by Yes, sir. reducing the CSF or creating a herniation in the brain. We Yes, cut down the cranial bone and we do herniate the brain, right? yes, sir. So in that condition, how can you do brain stimulation? Oh, It is okay, sir. a question of life and death. See, it is a Okay, situation when the patient is stable. okay, sir. Patient Thank you. stable ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? Thank you. Next question. प्रकाश जी, ये 2nd वीक ऑफ अप्रैल को सेमिनार रख सकते हैं? हाँ सर, हाँ, मेरा वर्कशॉप कल 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 बात करते हैं, 2nd वीक ऑफ अप्रैल। कल बात करेंगे। ठीक है, किसी को कोई सवाल? Sir, of course, I'll transfer your money right now. I did not get time. It was too hectic for me. Namaste, sir. हाँ, Sir, from Karnataka. Myself, Pavana. Sir, how to keep the brain healthy and means beautiful. Keep beautiful thoughts in your mind. Take a proper breathing. Do pranayam. Live a happy life. Don't criticize anyone. Don't be against anyone. Read good books. Read Bhagavad Gita. Or if you follow any religion, Quran or Bible, read them religiously. Follow good principles of life. Your brain will not be damaged. about deep breathing, you are telling, sir. आराम से Something. सांस लो ना। हाँ. अब तो सांस ही गलत लेते हो।
ऑक्सीजन जाएगा कहाँ से शरीर में? बीमारी How तो वही will खड़ी हो गई। लंबी सांस खींचना तो हम भूल ही गए। We don't take deep breathing. how it affects, sir, breathing? Do deep breathing. Breathing मतलब क्या? सांस लंबी खींचो, लंबी छोड़ो। उसको रेगुलर हैबिट बनाते जाओ। आज 5 मिनट से चालू करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा है, फिर देखो आपकी सांसें लंबी हो जाती है। टेक डीप ब्रीदिंग। डीप मतलब लंबा लो, लंबा छोड़ो। एक सवाल तो पूछिए मुझे, जो काम का सवाल हो। सर गुड इवनिंग सर, मैं जॉनसन बोल रहा हूँ सिलीगुड़ी से। बोलो जॉनसन। तो सर मैं तो डॉक्टर आई पिचरियन का जो ब्रेन कूलिंग सिस्टम वीडियो देखा, फिर उसके बाद और भी उसका ऊपर वीडियो से मैं देखा। मैं उसमें आई मीन इट वाज उसमें लिखा कि उसमें बोला गया कि अगर वो कूलिंग सिस्टम जो सीएसएफ से होती है वो करने के लिए अच्छे से सोना पड़ेगा। स्लीपिंग नाइट रेस्ट इज वेरी एसेंशियल। आप क्यों इतना काम करते हैं, सोते नहीं टाइमली, 4 o'clock तक 3 मेरी बात o'clock छोड़ दो, मुझे बहुत काम बाकी है। मुझे तो लिटरेचर लिखना है, ये लिखना है ताकि आगे वाली जनरेशन, जो गलतियां हो चुकी है पीछे, पैरालिसिस पर लाखों लोगों की जान पर बनी हुई है। One life if you sacrifice for hundreds of life is no importance. This is what Yalla Paranga Dr. Subbarao said. मेरे अकेले की कुर्बानी से अगर कुछ लिटरेचर बनता, कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, कुछ किताबें लिखी जा रही है, कुछ ऑथेंटिक काम हो रहा है, I don't think so that life has any importance in my eyes. I don't give importance when millions of people's lives are at stake. एक शास्त्री की मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। So we need you for long span, not for short span. Whether you need me for long span or short span is not the question. It's the span that literature, how am I reviving this patient is important. That has to be scripted in document. That is why we are buying the MRI and CT scans. Take care of your health also, sir. मेरा हेल्थ का छोड़ो, जाना सर सर कभी कभी ना कभी तो आप तो फुल नाइट रेस्ट लेते होंगे। मैंने ये कोई कुछ दिन जमाना हो कभी गया साहब, ये कोई जमाना हो गया, कोई 32 साल हो गया होगा, 30 साल हो गया होगा। सर अगर क्लिनिशियंस, अगर हम लोग हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करेंगे तो पेशेंट कैसे करेगा सर? अगर हम किसी को पेशेंट तो रात को अभी 10 बजे आके बैठ गया मेरे चैम्बर में, वो नीचे बैठा हुआ पाएगा, आईजीपी बैठा हुआ पाएगा, हाईकोर्ट का जज, पुराने जज सब बैठे हुए पाएंगे, अभी मिनिस्टर्स एमएलएस बैठे हुए पाएंगे। मैं मिनिस्टर एमएलए को रात को, मिनिस्टर्स एमएलएस को रात को 1 बजे 2 बजे के बाद अपॉइंटमेंट देता हूँ ताकि मेरी क्लिनिक डिस्टर्ब ना हो। सर मैं इसलिए बोल रहा था कि हेल्दी ब्रेन के बारे में चर्चा हो रही है ना, मैं इसलिए बोला कि मेरा हेल्दी ब्रेन के बारे में नाइट रेस्ट छोड़ो, होती मेरे है। को तो 32 साल हो गए। मेरे पर 600 मिलीग्राम डाइजापाम काम नहीं करता, वो एपिचेरिन तो पूछो क्यों नहीं करता। एपिचेरिन का फोन नंबर है नहीं है तो पूछो, मैं दे देता हूँ, फोन करके पूछो, सर अभी शास्त्री जी ने 600 मिलीग्राम डाइजापाम मेटाजोलम मारा, उनको वो मरे क्यों नहीं, पूछो उनसे। Write a question to him. He will give a beautiful reply. मैं तो चेरियन सर के साथ आज भी काम करता हूँ, एंड टुडे आल्सो आई फील दैट आई हैव टू कटेल द कॉस्ट। इस पे और रिसर्च कर रहे हैं और काम कर रहे हैं कि और पेशेंट्स को और कैसे रिकवर किया जाए, रोबोटिक ग्लव्स के साथ पर ये पार्किंसन की स्पास्टिसिटी को कैसे तोड़ा जाए, सीख रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, हर डिफिकल्ट केस को कैसे सॉल्व किया जाए, कर रहे हैं ना। Hello. Yes. Good evening, sir. This is Anand Moria from Delhi. अरे मोरिया जी
पता नहीं, आपकी बात सुनने से कुछ और याद आ जाता है। आपको भी पता होगा मुझे क्या याद आता होगा। नहीं, वो बेस्ट बैच था जिसमें हमने बहुत मजे किए थे। अरे मजा आ गया। वो कहाँ है वो मेरा वो लल्लू राम, वो तो सो गया होगा। नकूल। अरे बड़ा मैं मजा आता है, उसकी आवाज सुनने से मेरे को वो याद आ जाता। देखिए नहीं, कल सबका छुट्टी होगा ना, मैं उसको बोलूंगा सर को कॉल करने के लिए। अरे ठीक है, नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, मेरी बात हो गई थी उससे कल। बड़ा हाँ अच्छा। हाँ। अच्छा सर, ये है कि मैंने मॉर्निंग में आपको मैसेंजर में मैसेज किया था रिगार्डिंग टू स्टिमुलेशन 10 सेकेंड टू 1 मिनट। एक्चुअली डिस्कस मैं ये करना चाह रहा था। मैं सीपी चाइल्ड जो 24 ईयर ओल्ड बच्चा उसको ट्रीट कर रहा था, और बहुत ही अच्छी बात है कि वो आफ्टर 24 ईयर Can you speak वो in English? Others will also understand. the patient which I treated now, 24-year CP child, and after the stimulation, brain stimulation, NIBS, now he is able to sit independently on without armchair. कितने दिन में किया? How many days did you take? Within a 10 days. Within a 10 days, and before means by And birth how many is minutes did you stimulate this patient? how many, sir? How many minutes did you stimulate this patient? Yeah, so that's why the abdomen region I stimulated around to 10 to 15 seconds. But the main question is that when I stimulated the hip region, the glutes muscles, because the joints are very stiff. I think we can say it is not a spasticity, is it is a rigidity. You are right. It is rigidity. You have to It is a use. rigidity, but You have to when use Papa 1, Papa 2, Papa 3. but sir, unfortunately, when I treated around 1 minute, the rigidity is going to convert into spasticity. Yeah. Rigid. The That's second stage of rigidity goes to yes, sir. spasticity. That's why I am asking that the stimulation, if it is going from 10 seconds to 1 minute, then it is okay because the result is come. See, question is depends from patient to patient. Your decision, I appreciate, and you have done the right job. मौर्य जी, बट इस खुशी में तो एक बर्थडे बनता है आपका। आप भी बोल रहे थे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं सर, इस खुशी में तो एक बर्थडे बनता है आपका। हमने सेमिनार में देखा कि नहीं रिजल्ट है, देन रिजल्ट है, डेफिनेटली हमें प्रूफ हो गया नहीं मसल्स का ग्रेट इंक्रीज हो सकता है। और You सबसे speak in हैप्पीएस्ट है English. कि You speak in English. ओके और सर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करें। आप किस डाउट्स पर सेमिनार में आए थे और आज क्या पोजीशन है? इंग्लिश में बोले पहले, फिर हिंदी में बोले। First of all, I am a MPT ortho physio, and around 45 patients we are treating. But all these are ortho. We never try to take the neurological case because we are only two physio, and it is very difficult to take the neuro cases. But unfortunately, we decide to visit to MK Sastri sir after viewing the many videos from the Facebook. Then we decided to visit Hyderabad to learn some techniques which is the outcomes which is so sound, which all things are we are seeing in Facebook. After visiting, first of all, we see the very hectic schedule of sir. Then we realize even the how outcomes of the neurological case is so beautiful. Within a second, we got a very means very perfectly outcome of the spasticity and the muscles grading, which are improving. And after doing the practical by me, then I realized now this can be really happen by the stimulations, by the correct stimulations pen. अब आपको हिंदी में थोड़ा बता दें इसके बारे में। मैं एमपीटी ऑर्थो आप इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट। एयरफोर्स में काम कर रहे हैं? हाँ, मैं इंडियन एयरफोर्स में काम करता हूँ। एक्चुअली हमारे पास 45 की ओपीडी थी। हम न्यूरोलॉजिकल केस नहीं लेते थे क्योंकि 2 फीसों से इतना केस नहीं मैनेज हो सकता तो था। फिर आप मेरे को बताओ, मैं 150 पेशेंट कैसे मैनेज करता हूँ? सीपी से लेके ऑटिज्म से लेके टिपिकल पार्किंसन से लेके एटिपिकल पार्किंसन से लेके स्टेम सेल से लेके
अकेला कैसे मैनेज करता हूँ? You are the expert, that's why we are visited here. 150 पेशेंट्स पर डे, ऊपर से 45 की आईपीडी है, 45 आईपीडी प्लस 100 ओपीडी, 70 ओपीडी। कैसे मैनेज होता है? Definitely सारे yes, न्यूरो, और you तो are है a ही guru. नहीं, और तो You एक are a आध guru. मिलते हैं। You are a guru, sir, and we learn more and more from तो इस बात में एक बर्थडे हो जाए। you. ठीक है सर, बिल्कुल हैदराबाद आएंगे, आना ही है। मेरे लंगूर को भी लेके आना, उसके बिना मजा नहीं, वो डेफिनेटली डिसाइडेड है। हमने तो पहले ही डिसाइड किया था। Now I'll teach you a simple technique how to go from the spine to release the spasticity of the muscles from the back. ये मैंने अभी जो ऑर्थो आया था मेरे पास, I will teach you how to make stem cells also. They're very low cost, only to my good students. You can make stem cells in 5,000 rupees. Authentic stem cells from the bone marrow. We have done more than 50 procedures, no side effect, nothing. We have given to all the patients have improved. This time also you will see, we are giving bone marrow, and we started this time in this seminar only. Ortho was speaking, we said, okay, we'll start. We started, and now it's going like anything. Everyone wants stem cells because it's the cheapest stem cells we are producing in this country. And it is authentic with stem cell. We are buying the microscope very shortly. You can see the bone marrow. Then we will show you different types. We don't have electronics microscope. Once the money is collected, we'll show you the stems, different types of stems made from the bone marrow. आनंद ही आनंद कर दिया, आनंद ने, मजा आ गया। शुभम बख्शी, आनंद है, अब आनंद आ गया। अब लगता चैन से मर सकेंगे। आने वाली पीढ़ी जाग गई। You know, when the youth of the country is awake, the old can sleep. I'm very happy कि मौर्य जी जैसे enthusiastic लोग, प्रकाश जी इस उम्र में भी इतनी मेहनत करके, उनके दोस्त, all these people, I am very happy with your results. Nothing can be more. इतनी सी बात सुनने से रात भर रिसर्च करने की हिम्मत आ गई। Research is not your work, research is my work. See, कोई भी अच्छे काम में, चाहे महाभारत हो या कुछ भी, this is a महाभारत, it's a war. Someone has to sacrifice his life. And if I sacrifice my life for this research, no harm. The books, the literature which I have written will guide the future generation for 100 years. What Geo Sunfa has written 100 years back, what Keratomy was written by Kochara in 1905, still followed. Similarly, Epicharian or cleaning and cooling of the brain gave me new concepts. We recovered large number of patients, getting in the most difficult cases. ठीक है, मुझे उम्मीद है ये और रिकवर होंगे। आप भी बात को आगे बढ़ा, बहुत अच्छा लगा बात करके, आनंद आया। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी होली तो भाई क्लिनिक में ही मनेगी। We don't have time tomorrow for holy celebration. We have a hectic schedule. That's the best part of my clinic. There is no Holi, no Diwali, no Christmas. It is 24 into 365. All are welcome to my house. कभी भी आइए। बगल में पीजी गेस्ट हाउस है, वहां रुकिए। अब तो हमारा हॉस्पिटल भर्ती पड़ा है। और किसी को तकलीफ हो तो मेरे बिस्तर के मेरे बगल में सो जाए, और नहीं हो तो बिस्तर के बगल में गद्दा लगा के सो जाए। एक गेस्ट हाउस और लिया था कि आप लोग को कोई तकलीफ ना हो। जब इच्छा तब आइए। We have a vacancy of physiotherapist. Anyone wants to apply, they may apply. बाकी होली की सबको राम राम। I wish
Everyone a beautiful Holi. Celebrate beautifully. We have no celebration. It is our bad luck. होली दिवाली को देखते हुए जमाना हो गया। क्लिनिक से बाहर निकले कोई जमाना हो गया। Even today we say that when was the sunlight? I did not see the sunlight today. I forgot to see the sunlight. I was so busy today. I forgot to see the sunlight today. रात हो गई पता ही नहीं चला। अब कब सुबह होगी पता ही नहीं चलेगा। Expectations of the patients and recovery. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत मजा आया। Really enjoyed the class. आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। All blessings for you. May God bless you. But may you all be blessed by all His blessings. आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। All my blessings are with you. सदा सुखी रहो, आनंदित रहो, मौज में रहो। नमो हरिंताणम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, नमो उच्चायनम, नमो नोहे सर्व साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप नाशनो मंगलाय चंद्र से परम होई मंगल। सबका मंगल हो। Everyone be happy. Sarve bhavantu sukhindu, sarve bhavantu nirate. Everyone be happy. Everyone be peaceful. May God bring glory to your mind, hand, and wisdom. May you take the right decisions of your life to recover the right things. This is a free class. Don't confuse between revision class and this class. Revision class is based on acupuncture, tongue, and integrated techniques. That is 8,500 rupees for more than 100 hours. This is for 3 days free class. It has nothing to do with that class. That class has nothing to do with this class. That is separate. This is separate. That is Punjab. This is Chand. It is Hyderabad. Understand? Revision is Thursday, Friday, Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday. Our acupuncture, higher style acupuncture techniques. I'll give you all the notes of the points. Those who want to study, they can study. Those who want to become an expert of NIBS, they can come to me. I'll teach them how to practice NIBS. My clinic is open to all. Purchase, work, recover. ठीक है? धन्यवाद. Thank you. राम राम भाई. होली की सबको राम राम भाई. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. आपको भी होली की मुबारकबाद सर. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, everybody. Happy Thank you, Diwali. Winnie. Thank you. Happy Holi. Bye. Happy Holi. everyone. Thank you, Happy Holi. sir. Good night.